Okay, see. So first jam, Curie temperature of magnetite is. What is Curie temperature? Anyone? What is Curie temperature? Okay, this is a particular temperature at which magnetism is lost. Okay, so for magnetite, it is 570. Okay, 570 degree. Next. Sir, is there any formula to calculate this? No, this Curie temperature is fixed. Okay, a particular temperature at which magnetism is lost. Okay, so sir, can they ask for like any magnetic mineral? I mean, which possess magnetic Huh. properties? Limitation is it should be magnetic first. Okay, yes. So sir, Okay, are so there other mostly you will examples see which, this for magnetite and hematite or for typically iron ores. sir, what is for hematite? Hematite for it is things around 700, 670, 700. 670. Uh, Next, question number 42. Okay, reaction is you need to balance. Oh, okay, if you see here, 4 silica. Okay, 1 silica is here. Need to add 3. Okay, 3 SiO2. Just simple, balance the reaction. Clear? Any doubt here? Sir, but what about the oxygen molecules? If it's Yeah, got you an can count it. SiO2, See here, here you have 5 oxygens. Okay, then 3 to the 6. Okay, and plus 1. So total 12 oxygen in right hand side. Okay, now here you have here 10 oxygen. Okay, and 2 here. Total 12. So 12 in left hand side and 12 in right hand side. but sir, they said, okay, so we have to consider that one water molecule as well. Yeah, oxygen from water molecule as well. Okay. Balancing between left hand side and right hand side. Clear? और किसी को डाउट? ठीक है, Mars have 2 moons, Phobos and Deimos. Next, olivine is converted to what slide at a depth of 410. 400. Okay, this is first conversion. 410, then 550, then 610. ठीक है, ये सारी रिएक्शन लर्न करके रखो अच्छे से. Okay. Next, maximum age of oceanic crust is not found older than. 200 million years ago. Okay, oceanic crust maximum 200 million. Why? When you have continental crust in billions years, but oceanic crust is only 200 million year. Why? Why is it so?
Sir, because it is continuously under tectonic activities. Subduction and drifting is continuously going on. So in between from 180 to 200 million, okay, after that you will see the subduction, okay, and complete destruction of the oceanic crust, and new oceanic crust is formed. Okay. Next, 46. In total, we have how many polymorphs of silicon? Sir, 6 polymorphs, no? We have total 9 polymorphs of silicon. Okay, including one synthetic catite. Okay, so here you need to consider alpha, beta, all forms. Means, see, first white, okay, then coesite, then low alpha quartz, high beta quartz, catite, synthetic polymer, ठीक है, then low tridymite, low alpha tridymite, high beta tridymite, then low alpha cristobalite, high beta cristobalite. Okay. So Quartz, yeah. For quartz, you need to remember everything. Okay. Similarly, in crystallography for isometric system, remember each and everything, every form faces for isometric. Similarly for quartz, क्वार्ट्स की हर एक चीज को डिटेल में करके रखना है, क्योंकि सिंपल चीजों के डिटेल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. इसके पहले पॉलीमॉर्फ्स पे कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफरेंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब पॉलीमॉर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यस, एक आपको अगर आप ढूंढते हो तो आपको एक टेबल ही मिलेगा पॉलीमॉर्फ्स ऑफ सिलिका. यस हाँ Sir, sir, what was alpha quartz, okay. beta quartz and low quartz and high quartz. सर ये Yes. आपस में synonymous है या चारों अलग अलग हैं? नहीं, दे आर ऑल पॉलीमॉर्फ्स. Yes sir, मतलब सब मतलब they are 4 different polymorphs, right? या Okay sir. low alpha quartz, low beta, high beta quartz, then catite, then low alpha tridymite, high beta tridymite, low alpha cristobalite, high beta cristobalite. मतलब जो नॉर्मल हमको पता है फॉर्म्स, उसको बस अल्फा बीटा लगाना है. Sir, then cristobalite and tridymite कोएसाइट are एंड having 2 separate स्टिशोवाइट को नहीं polymorphs. है. हाँ, स्टिशोवाइट और कोएसाइट को नहीं है बिकॉज दे आर हाई प्रेशर पॉलीमर्स, है ना, इस वजह से. So what was that other name? Catite. कैटाइट, KAETITE. मैं टेबल शेयर कर दूंगा उसका. सारे फॉर्म्स के कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखने हैं, ठीक है. समटाइम यू में सी डिफरेंस बिटवीन स्टिशोवाइट एंड कोएसाइट, ऐसा भी पूछ लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज पॉलीमॉर्फ? Same chemical composition but different Unique physical forms. structures. Okay. Different marks. Then angle between cleavage is 56 degree and fill in the blank degree, making all amphifold easy to distinguish from pyroxenes. 124 degrees. 24, very easy. If you see, looking down C axis, let's say this is your face, so you will see cleavage like this. Okay, so this is your 56 degree, let's say, so this will be your 180 minus 56 means 124. जिसका मैं क्या तालिब भी है तो शायद से. Clear? Yes, sir. Next, 48. You have total. सर 4 हाइड्रस मिनरल होते हैं ना. आंसर में कितना डाला था? 3. भी दिया था सर, 4 होना चाहिए. नेम इट. 4 कौन कौन से?
Talc, gypsum, talc है clear, gypsum clear, then topaz और कौन सा है? एपेटाइट फॉस्फेट है, OH नहीं है उसमें। A2O5 पानी नहीं है। 4 सिलिकेट्स है, 3 हाइड्रस, 4 सिलिकेट्स, 1 फॉस्फेट, 1 कार्बोनेट। सर हाइड्रोस थी ना सर? क्लियर? मोहित ऐकू नाही येत आहे. सर 4 हायड्रस आहेत, एक मी सांगतो सर कोणते हेपॅटाइट चौथा कौन सा तेच ते विचारता हो. तुमने फॉस्फेट बोला पर फॉस्फेट में OH नहीं है. अपेटाइट बोला ना. यस सर हेपॅटाइट मध्ये आहे ना सर OH. क्या कंपोजिशन है? CA5PO4/3 in bracket OH negative or Cl negative or F negative. इसके पहले वाले भी टेस्ट में आया था ना सर, इक्वल प्रोपोर्शन वाला प्रॉब्लम, उसमें तो होता है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ. हाइड्रस एंड सिलिकेट बोथ है सर वो। मैंने कहा CA5PO4 3F ही तो मिल रहा है. OH भी सर हाइड्रोक्सिल अपेटाइट स्पेशली एक मिनट नाम सर, दिया मैं है. ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल फॉर्म है उसको स्पेशल फॉर्म दिया हाइड्रोक्सिल अपेटाइट. सर ते 3 आयन्स सेपरेटली जॉइन होऊन 3 वेगळ्या व्हरायटी देतात. बेसिक याच्यात नाही आहे. ठीक है, ये मैंने बनाया था एक्चुअली, तो ऐसा कंफ्यूजन रहेगा तो वो देंगे नहीं एग्जाम में. ठीक है, चिंता मत करो. बिकॉज देयर इज सेपरेट नेम फॉर हाइड्रोक्सिल अपेटाइट इन विच यू विल फाइंड OH ग्रुप. नॉर्मली OH ग्रुप नहीं दिया गया है. सर मैंने आपको एक टेबल भेजी, वो देखिए, उसमें एपेटाइट के कंपोजिशन में OH है. या है, ओके. 1 2 3 4. ओके, मेक इट 4. ठीक है, टाल्क, जिप्सम, एपेटाइट एंड टोपाज, in which you have OH group, 1 carbonate, then 1 phosphate and 4 silicates. Silicates कौन कौन से है? Talc, orthoclase, quartz and topaz. Correct. Next, Si2 ratio of phyllosilicate is 2:5. 5. 2:5. Okay. So, radius ratio of NaCl is in the range of 0.73 to 0.414. Then the indicated coordination number of NaCl is 6. 6. okay. 6. एक टेबल आपको लर्न करना है इसके लिए. रेंज के हिसाब से कोऑर्डिनेशन. हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी कि अभी यहाँ तक जो है मैंने लगभग हर टाइप का न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दी है.
ठीक है, उसमें पुराने भी हो गए, नए भी हो गए, जितने मैं बना सकता था वो सब हो गए। अभी मुझे आप लोगों से रिस्पांस चाहिए कि कोई ऐसा पोर्शन है जिस पर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ वीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मुझे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम जा रहा स्ट्रक्चरल है, जियोलॉजी बाकी तो हो जा रहा है बट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। जियोलॉजी के क्वेश्चन। सर स्ट्रक्चरलचे डायग्राम वाले क्वेश्चन्स, हाँ ज्यात काही मॅप वगैरे दिलाय तसे क्वेश्चन्स. कंटूर्स वाले क्वेश्चंस मेनली. ओके, आई विल ट्राई। तर तो एक भावनाने तुम्हाला क्वेश्चन पाठवला होता ना, तो पण एक थोडासा ऍड कराल. अरे हो, मेरे को बहुत लोगों ने एक ही डाउट भेजा। ठीक है, मैं भेजता हूँ आज कंपल्सरी। Okay, next. A sandstone bed whose attitude is 90 degree and 30 degree is exposed on a flat surface. The true thickness of the bed is 100 meter. The width of the outcrop of the sandstone bed along north-south traverse on the ground is fill in the blanks meter. Okay. Let's try to draw a diagram. $30 degree. Okay. Deep is 30 degree. Exposed on flat surface. True thickness. Okay. सर एक्सपोज्ड ऑन फ्लॅट सरफेस तर वरती येईल ना. हाँ, दिस इज फ्लैट. सो डीप है ना, डीप तो नीचे ही रहेगा एनी हाउ, ये और ये. ओके, दिस इज योर डीप 30 डिग्री. ट्रू थिकनेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो दिस इज योर 100 मीटर. ओके, नाउ विड्थ ऑफ द आउटक्रॉप. ओके, सो ऑब्वियस बात है, आउटक्रॉप बात हो रही है. आउटक्रॉप कहाँ पे मिलता है? सरफेस पर, मतलब ये पूछा है. दिस इज योर एक्स. Okay, so now calculate. So perpendicular and hypotenuse. So perpendicular and hypotenuse means which ratio? Sine. Okay, Sine 30. Sine 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is 100 meter divided by hypotenuse is x. Value of sine 30 is half equal to 100 divided by x. Okay. So दो इधर x इधर, so x is equal to 200. Clear? सर मला तो सर अर्थ नाही कळला. व्हॉट डू यू मीन बाय एक्सपोज्ड ऑन फ्लॅट सरफेस? सर एक्सपोज म्हणजे तो 30 डिग्री वर राहील ना. See, bed is dipping. A sandstone bed is dipping. Okay, like this at 30 degree. बट आपको सरफेस पे एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर इतना आपको सरफेस पे दिखाई दे रहा है, बाकी आपको दिखाई नहीं दे रहा. दैट इज आउटक्रॉप. हमेशा आपको आउटक्रॉप ही दिखेगा, बाकी तो आप बाद में पता करोगे. सर ऍक्च्युली सर मी काल त्याला वरती कन्स्ट्रक्ट करून सेम आन्सर आला, जस्ट ट्रायंगल वरती बनवला होता. दॅट्स इट. एक्सपोज करून वरती म्हणजे कुठे असं? सर हा असा हा. एक्झॅक्टली Above the flat surface. मीन्स टेल मी, ये बेड ऊपर ऐसे कैसे जाएगा? मतलब सरफेस से ऊपर बेड ग्रो करेगा. सर ऍक्च्युली म्हणून मला नॉर्थ साऊथ ट्रॅव्हल्सवर डाऊट आला होता की आपण काहीतरी गडबड केली आहे, बट आन्सर आलो होतो म्हटलं ठीक आहे. सी, कभी कभी क्या करते हैं ये नॉर्थ साउथ ट्रैवर्स, ये डायरेक्शन में कंफ्यूज कर देते हैं, तो डायरेक्शन को घुमा देना. नॉर्मली आपको पता है ऐसी नॉर्थ है, आप हॉरिजॉन्टल ले लो, कोई इशू नहीं होता. So, यस, sir, what is true thickness and what is vertical thickness? So दोनों में difference क्या है? ट्रू थिकनेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. वर्टिकल थिकनेस, वर्टिकल इज सेम. So both are the same, ना? यस यस.
Next, an aquifer has a cross-sectional area of 1000 meter square and hydraulic gradient is given if water is flowing from the aquifer at a rate of 10 meter cube per second hydraulic conductivity. Okay, K निकालना है, simple. Can use Darcy law. So Q is equal to KAI. Okay. So you need to calculate Q divided by AI. So Q is 10 meter cube per second. सब मीटर में है, कोई इशू नहीं. Divided by AI. Area is 1000 meter square into gradient 0.01. All values are given. Simply calculate. You will see answer 1 meter per second. Next, the plunge of the normal to the axial plane of vertical and upright fold is. So first, what is vertical or upright fold? Let's say this is your upright fold. Isoplunge. Okay, this is your vertical or upright fold. Now if fold is vertical, means obviously this is your axial surface, ground surface. Okay, means axial surface and horizontal is same. Okay, and what is plunge? Plunge is the angle between horizontal and axial surface. But in case of vertical or upright fold, both are coinciding. Okay, lying on one another. So obviously, no plunge means 0 degree. Okay. Plunging fold कैसा रहता है? This is your plunging fold. This is your angle of plunge. Okay. But in case of upright fold, ये जो लाइन है, ये कहाँ पे आ गई है? यहाँ पे ओवरलाई कर गई. तो 0 डिग्री. Clear? सर Yes. सर वर्टिकल फोल्ड में एक्सियल प्लेन का डिप क्या होता है? डिप नहीं रहेगा. वर्टिकल है मतलब वो 90 डिग्री है. सर हम see. एक्सियल प्लेन के डिप के बेसिस पे वर्टिकल एंड अपराइट फोल्ड को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं. वर्टिकल फोल्ड इज विद द एक्सियल प्लेन जिसमें वर्टिकल एक्सियल प्लेन है और डिप इज 0 डिग्री, जबकि वर्टिकल फोल्ड में डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन एंड फ्लंज ऑफ द फोल्ड हिंज लाइन इज 90 डिग्री. तो दोनों अलग अलग नहीं होते? तो यहाँ तो हमको प्लंज को देखना है ना, तो हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ चेक करना है. सर 0 डिग्री कसा रहता परत सांगा ना प्लीज. What is plunge? Angle between horizontal and axial surface. Okay. Let's say this is your surface. Okay. But your fold is like this. And in that case, you will have this angle theta, and this is your plunge or plunging fold. Okay. But now here, in case of vertical or upright fold, this is your horizontal surface, and your fold is like this, and your axial surface and horizontal is same. So no plunge, 0 degree. बट सर वर्टिकल फोल्ड आहे तर आपण हॉरिझॉन्टल याच्यात काढतोय ना, तर ती वर्टिकल होईल तसं 90 डिग्री नाही होणार त्याला. ते आप अपराइट लोग फोल्ड क्या अशी करो, टर्न होते ना पूर्ण. ये डायग्राम याद रखो एंगल के हिसाब से. ये जो हमने बनाया था ना इंटरलिम एंगल के वजह से,
इस टाइप का, उससे हिसाब से चलो, उस टाइप में। क्लियर? वर्टिकल है पर एक्सियल सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है ना। इसके डाउट तो सर सरफेस लावती 90 डिग्रीला कट करेल ना. हाँ, एक but एक्सियल प्लेन हमारा आता प्लंज हुआ है तो एंगल जो है हॉरिजॉन्टल वो सरफेस ना 90 हॉरिजॉन्टल पर कट करेल. सी, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को 90 से कट करेगा, ठीक है। पर जब हम उनके बीच का एंगल देखेंगे, ये एक्सियल सरफेस है, सॉरी एक्सियल प्लेन है, ठीक है। सरफेस कौन सा हो गया, ये हो गया, जहां से इंटरसेक्शन मार्क हो, ठीक है। प्लेन 90 डिग्री है। बेसिक क्लासिफिकेशन डायग्राम में दिया है सर क्लियरली। हाँ हाँ, डायग्राम जो है ना, जिसमें सारे ये टाइप के फोल्ड दिए हैं, जो आपको काफी लोगों ने मुझे एक ही डाउन देखा है, न्यूट्रल फोल्ड, अपराइट फोल्ड, वर्टिकल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, ओके। एक क्लासिफिकेशन है, वो क्या नाम है इसका, मैं दिखाई देता हूँ। Luty's classification. Just wait. Okay. See this diagram. Okay. Here we need to focus on plunge only. Okay. Plunge angle is 0. ये सब लोग ड्रॉ करो, इसको अच्छे से याद करो। See here upright fold is given. दिख रहा है क्या, बहुत छोटा हो रहा है? सर दिख रहा है। Okay, this is very Hello, sir. important classification. Okay, here in this diagram, with the help of this diagram, you can comparatively study all the folds. Okay, or one is this same, no issue. Orientation is different in this image. Okay. सर इसी में जैसे अपराइट का तो प्लंज 0 हुआ, सर वर्टिकल का प्लंज हम कितना लेंगे? Again here तो fold वर्टिकल ही में प्लंज। वर्टिकल है, तो उसमें डीप अमाउंट भले ही 90 जाएगा, पर Yes. प्लंज 0 रहेगा। Okay, because होगा क्या? Yes. Clear? सर बट प्लंज भी तो हम हॉरिजॉन्टल से ही सर देखते हैं, 90 जाईल ना. तो 90 सर होना 90 चाहिए ना। होईल प्लंज. डिप एंड प्लंज बोथ विल बी 90। सर तो अँगल आहे ना हॉरिझॉन्टल सोबत, असा फोल्ड उठेल तर तो प्लंज पण वाढेल ना, 90 वर जाईल. आणि इथे पण सर 80 च्या नंतर हेच दिलंय पहा, 0 to 80 आली आहे ती, म्हणजे अपराइटला 0 आणि वर्टिकलला आय थिंक 90 आहे. हाँ, वर्टिकल भी दिया है क्या? सर पण प्लंज साठी अँगल बनायला पाहिजे ना पण.
Yes. Sir, for for vertical fold, the fold axis is also vertical. So then how will हाँ, प्लंज जीरो ही रहेगा हाँ वही तो क्योंकि फोल्ड एक्सिस भी वर्टिकल हो जाएगा ना. वर्टिकली है ना. हाँ सर, एंगल बन नहीं रहा है ना वहाँ पे कुछ. ऍक्सियल प्लेन आणि फोल्ड ऍक्सिस जे आहे ते दोन्ही पण वर्टिकल आहे, तर मग आपण सेम रिलेशन हॉरिजॉन्टल के लिए, सेम horizontal रिलेशन वर्टिकल के लिए हो जाएगा. हाँ, both are vertical, so plunge will be 0. स्टिल किसी को डाउट है? सर समझ नहीं आया, मतलब 0 कैसे हुआ? सही है. सीरीज डायग्राम में okay, this is your angle of plunge. Okay, Yes sir. this is surface of axial plane. This is your actual surface of fold. Okay, Yes sir. an angle in between them is your plunge. If you consider vertical fold like this. Okay, so again in case of vertical fold आपका जो plane है वो भी तो vertical हो जाएगा. Okay, like this. Yes sir. So vertical fold और axial surface इनके बीच में फिर से जीरो ही तो बनेगा. जो अपराइट फोल्ड है उसको आप वर्टिकली इमेजिन करो तो कंडीशन तो कुछ भी नहीं बदलेगी ना. एक्सियल प्लेन एंड एक्सियल सरफेस के बीच का एंगल देखो. एक्सियल प्लेन एंड एक्सियल सरफेस, एंगल बिटवीन एक्सियल प्लेन एंड एक्सियल सरफेस. Okay sir. और हिंज लाइन भी बोल सकते हो. Okay, next 54. Okay, so RB decays to SR87 with a decay constant. Okay, so very basic principle. If RB is decaying, so the same quantity जितना RB डिक्रीज होगा उतनी ही सेम क्वांटिटी SR में बढ़ती जाएगी. Okay, so initially you have 8 into 10 to the power 4 atoms of RB87, means let's say you have 80,000. Okay, and total 4 half lives are elapsed. Okay, and initially you have 10 to the power 3 atoms of SR87. 10 to the power 3 means initially you have 1000 atoms. Okay, now after first half life what will happen? This 80,000 will come to 40,000. Okay, and same जितना प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा. मीन्स सेम अमाउंट ऑफ पेरेंट एटम जितना डिक्रीज होगा सेम अमाउंट ऑफ डॉटर एटम बढ़ जाएगा. ओके, सो यू विल सी plus 40,000 in SR. Okay, after first half life. Then after second half life you will see 40 to 20,000 decrease, and same 20,000 you will see daughter isotopes. Okay, then after third half life you will see 10,000 and same amount is added to SR, 10,000. Okay, then after 4 half life you will see 5,000 and same amount of atoms added to daughter isotope. Okay, now you need to calculate the number of SR87 atom in the system at the end of 4 half life will be, fill in the blanks, multiplied by 10 to the power 3. So now count this, because this is first half life, then second, then third, then fourth. So after fourth half life you will see
So 40 plus 20 60 plus 10 70 75 plus 1000 76,000. So 76,000 means 76 into 10 to the power 3. So 10 to the power 3 is already present. So answer is 76. सर एकदा परत सांगाल का? आपने एक ये ग्राफ देखा है, ओके, जितना पेरेंट एटम डिक्रीज होगा, ओके, सेम अमाउंट ऑफ डॉटर एटम बढ़ता जाएगा, ओके। तो व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ हो रहा है मतलब वो आधे हो रहे हैं, तो पेरेंट आधा हो गया तो उतना ही डॉटर बन जाएगा, ओके। तो 40 का डिक्रीज हुआ RB87 में, तो 40 का इंक्रीज SR87 में होगा, ठीक है। और ऐसा कितनी हाफ लाइफ हुई? यू हैव सीन 4 हाफ लाइफ्स. So 80 to 40 here plus 40, then 40 to 20 plus 20, 20 to 10 plus 10, 10 to 5 plus 5, like this. Clear? समझ में? This is for SR and this is for RB. Clear? Yes, sir. सर डीके कांस्टेंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है? नहीं, you can also calculate with the help of formula. मैंने इजी मेथड सिलेक्ट की, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी इसलिए। और आंसर की में आपको रेंज मिलेगा, फॉर्मूले से थोड़ा एग्जैक्ट 76 नहीं आएगा, फ्रैक्शंस और डेसिमल में भी आ सकता है। See, every time in case of dating example, okay, you can calculate with the help of formula as well as with the simple analogy. सर उसमें फार्मूला वही लगेगा, n equal to n0 e to the power minus lambda t. हाँ वही हाफ लाइफ ट्राई करो आप होमवर्क में. Then a drainage basin with an area of 1 2 3 4 5 6, okay, 2 into 10 to the power 6 meters square receive continuous rainfall for 48 hours at uniform rate. So you have rate 3 mm. Okay, so convert millimeter to meter, 10 to the power minus 3. Okay, now your rate, then rainfall for 48 hours. Okay, so simply multiply for 48 hours. Okay, because rate is in mm per hour, okay, and time is in hours. So here you will see hour get cancelled. Okay, so now you have rainfall, you need to calculate volume. So volume is equal to 3 multiplied by 10 to the power minus 3 multiplied by 48, okay, multiplied by area. Okay. Area is 2 into 10 to the power, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 zeros. Okay, here you have minus 3. Okay. So calculate this. Okay, minus 3 इधर गया. See minus 3. So we will get 288,000 meter cube. सर मीटर क्यूब आपण mm ला मीटर मध्ये केलं आणि हे पहिलेचे मीटर स्क्वेअर यांना मल्टिप्लाय करून मीटर क्यूब करतो का त्याला? Area is in meter square
and rate is in meter. So meter into meter square, meter cube. Meter. Okay. Next, dip slip of fault is 200 meter and dip amount is 30 degree. The throw of the fault is. So what is throw? Okay. Throw is your vertical distance. This is dip slip. Okay. Dip slip is 200 meter. Okay. This is 90 degree. Throw, you need to evaluate throw, and the dip amount is 30 degree. So again you have hypotenuse and perpendicular. Okay. So hypotenuse and perpendicular means again sine. Again sine 30. Sine 30 is equal to perpendicular means throw upon hypotenuse, that is 200. Sine 30 is half is equal to t divided by 200. Okay. So 2 ones are 200s are. So t is equal to 100 meter. यस शिवानी, समझा नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ. For every parent isotope we get 2 daughter isotope, then can we multiply answer into 2? मतलब 76 को 2 से मल्टीप्लाई करना. यस सर. नो नो, वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही दिए हैं आपको डायरेक्ट. हमने डायरेक्ट एटम्स के काउंट से निकाला है, तो वो मेजर्ड एटम्स है. ओके सर. ओके सर. नेक्स्ट, इस किसका रॉन्ग हुआ ये? In bilaterally symmetrical brachiopod fossil, the angle between the hinge line and median line changes to 45 degree. Okay, let's say this is your median line. Okay, initially imagine this is your hinge line. Okay, so angular shear is the angle between these two. Okay, denoted by sine. Angular shear. This changes to 45 degree. It is given. This angle is also is the same. Okay, this angle is called as angular shear. So angle between hinge line and median line changes to 45 degree. The after deformation, then the angular shear is same 45 degree. ये जो एंगल है उसी को एंगुलर shear बोलते हैं. Okay, अगर यहाँ पे shear stress पूछ लिया था, तो कैसे निकालते? थोड़ी shear stress here. Shear stress is n psi. Okay, what is shear stress? Your shear stress is 10 psi. Now you have psi is 45 degree. Okay, so 10 45. So value of 10 45 is 1. So answer for shear stress is 1. But here you need to calculate angular shear only. Okay, so it should be 45 degrees. So here, sir, the hinge line is vertical one and the horizontal line is the median line. Yes. Okay. Not horizontal. ये बीच वाली.
ये हमने ग्राफिकली प्रोजेक्ट किया है, ओके सर। इमेजिन करना पड़ेगा। And what is the wavelength of secondary wave with a period of 10 seconds? Okay, so wavelength, you need to calculate wavelength and time is given. Okay, so what is the basic formula? B is equal to F multiplied by lambda. What is V? V is your velocity, Velocity of the wave. F is your frequency, and lambda is your wavelength. Okay. So now the wavelength of secondary wave. Okay, you need to calculate wavelength. Okay, but you don't have frequency here. Okay, but for frequency you have 10 seconds. What is frequency? Frequency is 1 by time period. Okay, 1 by time period. So 1 by 10. Okay, so you will see per second here. Okay, per second means your hertz. Okay, what is per second? Per second is nothing but your hertz. Now you have 0.1 hertz. So now you have frequency, and velocity is given 3.4 kilometer per second. Okay, but standard unit is meter per second for velocity. Okay, so we'll convert this. So 3.4 multiplied by 1000 for meter per second. Okay, now it is in meter per second. Meter and meter per second. Okay, and frequency 0.1 hertz. Okay, hertz is nothing but your per second. Okay, per second and second get cancelled here. Okay, so hertz and second यहाँ पे आपका cancel हो जाएगा. You only remain with meter. Okay, we need unit for wavelength. Now divide this. You will get 34,000. Okay, 34,000. Clear? Clear? Basic physics. Next, calculate how much higher San Francisco from Los Angeles. Okay, that long is given. So simply क्या करना पड़ेगा? Simple subtraction. Okay, 37 degree and 19 minutes. Okay, 1 comma means minute, 2 comma means seconds. North, then 33 degree 42. Okay, so you know, first observe here 33 degree, okay, and 42 minute. So you cannot subtract 19 from, sorry, you cannot subtract 42 from 19. Okay, so what I am doing, 1 degree को मैं minute में add कर दूंगा. Okay, so your 1 degree is nothing but 60 minutes. Okay, so simply I'll add 60 here. Okay, no, not in, sorry, यहाँ नहीं, यहाँ add करो. Okay, add 60 here. Okay, so you'll get 60 79 here. Okay,
So now you can write, instead of 37 degree, you can write 36 degree, okay, and 79 minute. Okay, now you can subtract 38 degree and 42 minute from this. Okay, तो आपको पता चल जाएगा कितना हायर है. हायर मीन्स कितना ऊपर है अकॉर्डिंग टू लेट लॉ. क्लियर? क्या किया मैंने? 19 से 42 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बढ़ाना पड़ेगा. तो 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट्स. So simply 60 minute मैंने 19 में ऐड कर दिया. Now you can easily subtract. You will see 37 minute here. Okay, and how much? 3 degree. Okay, 3 degree here. Okay, so answer is 3 degree 37 minute. Sir, in this type of question, how to decide कि add कुठे करायची डिग्री? See, 37 degree ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा ना. You need to subtract. Okay, so डिग्रीचे व्हॅल्यू वरून. Yes. Higher value from lower value. Lower value from higher value. आणि सर इथे डायरेक्शन डिफरंट असेल तर मीन्स नॉर्थ साऊथ किंवा नाही. साऊथ नॉर्थ असेल तर नो प्रॉब्लेम. म्हणून डायग्रेशन मेन्शन केलं. क्लियर? काय म्हटलं सर तुम्ही आवाज नाही आला. Digression, if direction is not mentioned, then it is problematic. तो डायरेक्शन दी रहेगी और सेम ही होनी चाहिए तो ही पूछ सकते हैं. ओके सर. Now, in sedimentary rock, the diameter of two grains A and B are 1,5 and 3,5 respectively. The difference in diameters between A and B is in mm. Okay. So if you have 1,5, so you have formula diameter is equal to 1/2 to the power 5 value. Okay. This is reverse formula based on 5 scalar. So value is 1,5. Okay. So if value of 5 is 1, so you will get 1/2. Okay. If value is 3,5. Okay. So if you put 1/2 to the power 3, okay, means you will get 1/2. So you need to calculate difference. 1/2 का cube means 1/8. So difference is 1/2 minus 1/8. Okay, 1/2 बड़ा रहेगा 1/8 से. Okay. So now calculate this. So you get cross multiply. So 8 minus 2, 6 by 16. So 3/8. Okay. 3/8 means 0.37. Okay. So in decimal 0.37. Clear? 2 decimals. Okay, so this is about jam. So स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्वेश्चंस में अभी भी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेपर में. ओके, वेटेज बढ़ा दूंगा मैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्वेश्चंस का. Sir, यस. sir, the numericals from stereographic projection, we have to identify which type of fold on the basis of stereographic projection. That types of questions are so difficult to tackle. बेस्ड ऑन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. ओके. Yes, sir. तो स्ट्रक्चरल में आ जाएंगे. ठीक है, मैं उसको भी बस. Okay, sir. Sir, have we covered almost every type of formula and the question which can be expected? Yes.
यू कैन सी 15 साल के पेपर स्टडी किए, देख लो आप, आपको मैंने पीडीएफ भी भेजा है. यस सर. Okay then, now gate. So your case is so unique that I am not getting any option D, precedent to support it. Precedent. Then for question 2 is wag direction mislead us. Okay. Then next question number 3, how many terms are there in? Okay, now this question from arithmetic progression. Right. So you need to calculate number of terms, means n. Now first term is 20. Okay, so you have value of a is equal to 20. Then you can calculate common difference b. What is common difference? Second term minus first term. So 25 minus 20. Okay, you can see difference of 5. Okay, AP में ही है, कैसे पता कर लिया? Common difference is same. Okay, then you have last term, it is an 140 given. Okay, now you have basic formula, that is an is equal to a plus n minus 1d. n minus 1d. Okay, so you need to calculate n. All the values are given, so 140 is equal to 20 plus n minus 1d. d is your 5. 5 से multiply कर दो तो 5n minus 5. Okay, so 20 minus 5 15 हो जाएगा. 15 minus कर दो from 140, so you will see 10 गया 30 25 125. 125 divided by 5 is equal to n. So 5 2s are 5 5s are, so 25. n is equal to 25. Options B. So, Yes. so we can also use that formula na, highest term minus lowest upon the common difference plus 1. हाँ, नहीं वो तो सम का फॉर्मूला है ना, सम चाहिए ना उसके लिए. सर सगळ्यात इझी डायरेक्ट काउंट करून घ्यायचे 140 पर्यंत पटपट. हाँ, ये छोटा था इसलिए. डायरेक्ट फॉर्मूला इज फॉर सम ओनली, बट सम इज नॉट गिवन, तो इसी से निकलेगा. तर नाही, कारण त्या फॉर्म्युलाने मी करून बघितलं तर आन्सर आला. Is coincidence because yes that is formula for last term only. नहीं yes, sum के लिए है ना, sum is equal to half multiplied by first term plus last term divided by, ये बोल रहा ना. नाही सर, no. I was saying 140 minus 20 upon their common difference, that is 5 plus 1. माहित नाही कोणता डायरेक्ट फॉर्मूला आहे काय लागेल. दोन्ही सेम फॉर्म्युले आहेत सर. यस, दोन्ही सेम फॉर्म्युले आहेत सर ते. हाँ तेज है. सी गेट में मैंने आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस डाले, पर इन योर फाइनल एग्जाम यू विल सी क्वेश्चन मोस्टली बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट एंड असर्शन बेस्ड, उस पर ही ज्यादा फोकस रहेगा. ठीक है, तो मैंने एक पेपर स्पेशली DI और स्टेटमेंट और असर्शन पे भी करवाया था. ठीक है, पर जरूरी नहीं है, बाकी इस पे भी एक एक क्वेश्चन आते हैं, है ना. तो मुझे हर टॉपिक को टच करना है, इसलिए आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलते हैं. बट इन फाइनल एग्जाम यू विल सी क्वेश्चन मोस्टली फ्रॉम स्टेटमेंट असर्शन बेस्ड टाइप के, देन DI. ओके, देन एखादा क्वेश्चन फ्रॉम अल्जेब्रा,
वो एक आधा फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से. Then next, find the 15 term and the sequence from the sequence of the sequence. Printing mistake. 15 term. Okay, so now you have value of n, that is 15. Then first term is given, so this is your a. D is again 15 minus 20. D is minus 5 here. Okay, 15 minus D is minus 5. So 15 term. So again same formula, an is equal to a plus n minus 1d. Okay, here n is 15, means a 15. Okay, you need to calculate a 15 is equal to a is 20. So 20, 15 minus 1, so यहाँ पे हो जाएगा 14. Okay, because n is value of n is given. So 15 minus 1, 14 multiplied by d is, your d is minus 5. Okay, so 14 5s are 70 or minus 70. So 20 minus 70. Okay, so answer should be minus 50. Option C. सर तुम्ही तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करत आहेत का आता? नाही, मी नंतर पाठवतो. हॅलो, नंतर पाठवतो, वेळ लागेल का. ठीक आहे सर. हो सर. Clear? Then speed of the train going from Nagpur to Allahabad is 100 km, while when coming back from Allahabad to Nagpur, speed is 150 km per hour. Find the average speed of the whole journey. Okay, जब भी average बोल दिया जाए और speed की बात हो रही, okay, you need to remember direct formula. Okay, that average speed is 2xy upon x plus y. This is your direct formula. So now apply. Multiplied by x. X is 100 km per hour. Multiplied by वापस आते हुए 150. Similarly, in denominator 100 plus 150. Calculate this. You'll get 120 km per hour. Option B. सर आपण डायरेक्ट ॲव्हरेज का नाही का तिथे, म्हणजे डायरेक्टली 100 प्लस 150/2 करू. डायरेक्ट ॲव्हरेज नाही घेता. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, चेंज होती रहती है, तो इस केस में हमको एवरेज ही निकालनी पड़ेगी. अब यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट करो एवरेज तो रॉन्ग ही आएगा हमेशा. 150 है और यहाँ डायरेक्शन भी अपोजिट है. नहीं 125 है सर. ऑप्शन में आपको 125 भी हमेशा मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए. Find the area of trapezium whose parallel sides are 20 and 18 centimeter long and the distance between them is 15 centimeter. Area of trapezium क्या है? Area is A plus b upon 2 into half h. into height. Half into sum of parallel sides multiplied by height. Okay. All the values are given. Okay. Half multiplied by 20 plus 18, 38. 38 divided by 2 कर दो 19. 19 multiplied by 15. So 19 multiplied by 15, 285. 285 correct.
Then out of first 20 natural number, one number is selected at random. The probability that is either an even or a prime number. Okay. Meaning of or is plus here. Or means plus. So even you need to consider even number as well as prime number between 1 to 20. So even number. How many even numbers are there? First calculate n of s. Okay. N of s is 20. Total n of, okay, total number of sample space 20, because we have 20 natural numbers. Then probability that is either even number. Okay, so let's say n of e, even number. How many even numbers are there? From 1 to 20, 10. Okay, so we have total 10 even numbers. Then calculate n of p. Okay, prime number. How many prime numbers are there? 8. 8. Okay, 1 is not a prime number. Clear? Now you need to calculate even number or a prime number. Okay, matlab addition, matlab in probability addition means union. Okay, so here you need to calculate an probability of even union prime. Okay, so probability of EUP. So what is the formula for EUP? Is equal to probability of E plus probability of P minus probability of E intersection P. Okay. So now first calculate n of E intersection P. E intersection P. ये जो प्रोबेबिलिटी का है, दिस इज 11th स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. ओके, एक बार गेट में आया था इस फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी. सो हाउ मेनी E इंटरसेक्शन P? टेल मी. मतलब ऐसा जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है. टेन बाई 20. नहीं, n ऑफ E इंटरसेक्शन P बता. प्रोबेबिलिटी तो निकालेंगे बाद में. Tell me the number who is even as well as prime from 1 to 20. 2. Only 2 means n is 1. Okay, so now calculate probability P of E. So we have 10 divided by total 20. 10 divided by 20 plus we have 8 prime numbers, so probability is 8 by 20. Okay, minus 1 by 20. Okay. Clear? So calculate this. We'll get 17 by 20. Option C. LCM ले लो. So 10 plus 8, 18 minus 1, 17. 17 by 20. Option C. Okay, mark this formula important. इस टाइप पे अगर आता है प्रोबेबिलिटी का, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऐसी रहेगी क्या? नहीं आएगा, छोड़ देना है सीधे, या फिर प्रैक्टिस करके रखो. Okay, this is important formula. 11 you will see this type of formula on probability in 11th or 12th standard. Next,
from quadratic equation. Sum and product of the roots of quadratic equation. So what is the general formula first? None of these. None of this, correct. What is the general formula? X square, okay, minus sum into x plus product Product is equal to 0. is equal to 0. This is general formula. Okay, so you need to put sum here, sum of roots, and product of roots here. Okay, so now if the sum and product of the roots of quadratic equation are, so this place is for sum. Okay, but minus sign is here in general formula, so your sum should be minus 20. Okay, and product is 3, so minus 20 and 3. So option hai nahi. Okay, option B is plus 20 and minus 3, so ulta hai. Okay, this is correct answer. So answer is none of this. Even sir, if we split 10, none of the combinations can bring the product as 3. Yeah, you can say. So, And volume of cube is 1728 cc centimeter cube. Find the surface area. So volume of cube means a cube. A cube. A cube is 1728. Okay, so simply you can calculate value of a from this. 1728 is a cube of 12. Cube of 12. And surface area of cube 6a square. 6a square. 6a square. So 12 ka square 144. So 6 multiplied by 144. Let's see. 864. Option A. Formula is 6a square surface area. Yeah. Next numericals. Many questions are common. Okay, so 31 is done. 32 hai sir. 32. Booger anomaly over isostatically compensated region is. How much? 0. 0. Because it's already compensated now. There won't be any anomaly. Correct. Then 33. Curie temperature, same, 570. Okay. For hematite, it is 770. Okay. For hematite, it is 770 degree, and for magnetite, it is 570. Okay. Next, to derive magnetic field from gravity field, the Poisson's relation can be used only when the direction of magnetization is. Sir, 90 degree? 90 degree. इसको याद करना पड़ेगा. You need to remember this. Sir, is it like from the magnet, if we put it vertically, magnetic field has a north to south bundle, right? Yes. And Poisson's ratio is for elongation. If I'll apply it from north and south direction, it will eventually compress. So it won't justify the Poisson ratio statement. So I'll put it from horizontal side. That will be exactly 90 degree to the magnet.
For perfectly conducting medium, skin depth is 0. What is skin depth? Skin depth is depth below the surface of conductor. Let's say this is your conductor. Depth below the surface of conductor. If this is your surface of conductor and this surface line, you can say this is your skin depth actually, the boundary of your conductor. So if it is conducting medium, means this conductor is in contact with some other metal. Okay, और इसके बीच में कोई इंसुलेटर है तो ये वैरी करेगा. If you have any insulator in between them, then it will vary. Then reflection coefficient at the interface between two layers of resistivity is A plus B upon A minus B. okay. So 9 plus 1 upon 9 minus 1. Okay. Rho 1 plus rho 2 divided by rho 1 minus rho 2. Okay. So 10 by 8, 0.8. Option B. सर रो 2 माइनस रो 9 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1 आएगा. एक मिनट. Yes, sir. 9 minus 1 upon 9 plus 1. Sorry, rho 2 minus. Rho 1 plus rho. कितना आएगा आंसर? 0.8. 8 divided by 10. Yes, 0.8. Option. The reflection coefficient, then plasticity index, plastic limit, है ना. 2 साल से इस पर फोकस चल रहा है तो सारे फार्मूले एक बार सुबह पढ़ के जाना. ओके, ट्राई टू रिमेम्बर एवरी फार्मूला ऑफ इंडेक्स. Then the value of Nernst partition coefficient when elements are neither compatible nor 1 means your value of KD. If KD is equal to 1, then you will see they are neither compatible nor incompatible. Okay. So ते कॅल्क्युलेट करू शकतो ना, कन्सिडरिंग देम इक्वल. जात पण नाही आणि हे पण नाही. सो 1 upon 1 is Value of KD less than 1, then they are incompatible, and KD is equal to 0, perfectly incompatible. Okay. Next, volcanic rock has Conrad normalized values of 31.7, 6.5, and 33.0. The value of europium anomaly, 3 decimal places. Okay. First, you need to calculate U star. Okay. This is your calculated value. Formula for calculator value, that is Sn plus Gd divided by 2. Okay. So value of Sn 46.5. And value of GD 33.9 divided by 2. Okay. You'll get 40.2. This is U star means calculated value. Okay. And your absorbed europium value
okay, is 31.7. Not absorbed, sorry, observed. Okay, observed value of uranium is 31.7. Okay, now you need to calculate europium anomaly. So anomaly is EU upon EU star. So EU upon EU star. So EU is 31.7 divided by EU star is 40.02. So if we divide this, we will get 0.788. 3 decimals. Clear? Next, class size range of bombs and blocks is more than 64 mm. 64 mm. स्केल्स पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं. Brazilian test was conducted on a rock sample having radius of 30 mm and thickness 25 mm. The failure load was 7 kilonewton. The tensile strength of the rock is. What is the formula for Brazilian test? 2P is your failure load, okay, upon pi dl. D is diameter, L is your length. So 2 into failure load is 7 kilonewton. Okay, so convert this kilo to newton because you need your answer in newton per mm square. So 7,000. Multiplied by 7,000. Value of pi is 3.14. Then diameter. Okay, radius is 30 mm. Okay, and here you need diameter. So 60 mm. Okay, and length is thickness. Length is nothing but thickness here. So 25 mm. Okay, so mm into mm square. So in numerator you have Newton and in denominator you have mm square. So Newton mm square. Now calculate this. We'll get 2.97 up to 2 decimal places. अरे यार डेसिमल प्लेस मेंशन नहीं किया. Clear? Then tangent sinks modulus at 50% UCS of and modulus ratio is given. So GPMC respectively the UCS निकालना है. So UCS is Young's modulus upon modulus ratio. Okay. Young's modulus upon modulus ratio. So Young's modulus is 80 GPa, and you need to calculate your answer in MPa. Okay. So 80 giga means 9 and MPa mega means 6. Okay. So difference of 3. So 1000 से multiply कर दिया. Now you have your answer is in MPa. Okay. And modulus ratio को unit नहीं होता ना. It's given 600. So now calculate this. 20 by 800 divided by 6 will get 133.33.
or 133.34. Round up to 2 decimal places. Clear? (61) is same. Okay, 0 degree. 62 is same. Next. Now 60. Okay. Need to remember formula for this. Okay, first. Del O18 is equal to O18 divided by O16 sample. Okay, sample divided by O18 by O16 standard. Minus 1. Multiplied by 10 to the power 3%. Okay, this is your formula. इसको याद रखो. अब तक 3 बार इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ चुका है. So here you need to calculate the value for sample. Okay, let's say this value is your x. Okay, consider this is your x, and del O18 is given 25. Okay, 25%. This small value. Okay, this is small value. Standard mean ocean water. Okay, so 25 is equal to sample. Consider value of sample is x divided by value, standard value is given, that is 2005 2005.2. Okay, multiplied by 10 to the power minus 6, then minus 1, okay. यहाँ का जो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 है, मैं इसको यहाँ भेज देगा. ओके, वो न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आई एम डिवाइडिंग हियर विद 1000. ओके, ये वाला दिस इज 10 टू द पावर 3. आई एम शिफ्टिंग दिस टू लेफ्ट हैंड साइड टू गो टू डिनोमिनेटर. ओके, नाउ कैलकुलेट. कैलकुलेशन तो आ जाएगा ना इजीली. ओके, you need to keep 10 to the power minus 6 as it is. Okay, so you'll get 2055.3 multiplied by 10 to the power minus 6. So 10 to the power minus 6 is already given. So answer is this. Just put an answer. बस formula याद है. Okay, you need to remember the formula. (64) is same. 65 is same. Done. Clear?